Hello everyone. So today's session is all about GATE DA exam preparation and counseling. So Sonu will clear all the doubts of counseling related, which will be started as soon as possible in the month of May for 2026-2027 session. So I would like to request from Sonu, please guide the students about the GATE counseling and please clear the myth about the GATE DA admissions in IITs, ISC, triple IT, and NITs. Yeah, Yeah. So hi everyone. Counseling has started. Whatever IIT is taking the exam is started. Like in IIT Delhi, I think next week there is a written test. So this year, I think only one IIT is taking written test for M.tech AI, and the rest of the IT is taking direct gate basis admission, like IT Madras, IT Kharagpur, IT Hyderabad, and all. So everyone is taking directly. Last year, I think IT Kharagpur also taking written test or interview, but this year they are taking directly. So this is changing year by year. Most probably next year many things will change. And as this year many a student I have seen like messaged me, they are facing issue like they wanted M.tech AI in IIT Madras, but they are not able to apply even they are top 100 student in GATE CSE, because IIT Madras has not accepting GATE CSE paper for M.tech data science and AI program. They are only accepting GATE DA paper. So if you have given GATE in data science and artificial intelligence, then only you are eligible to take admission into IIT Madras. So next year maybe, as I already said, next year maybe different another IITs also take these steps, and they also only took M.tech GATE DA students for M.tech AI, because in GATE DA, like, you guys are studying everything related to AI and ML that fulfill the M.tech AI requirement, like mathematics in detail, and machine learning, fundamentals of machine learning, artificial intelligence, and also you're learning Python and all. So that's why IITs are taking steps. Let's see for next year what will happen. And also in GATE DA, a students is less, so there is a high chance that you can score easily. Like, I think students who have scored 60 marks this year, who got AIR under 150, I think. So you can easily score good marks, and paper was not even tough. It was like easy to medium level. So, like, see, if you are a BTech CSE guys, and you are not sure that in which field you want to go, then you can prepare for MTech GATE CSE. But you are like sure that I want my future in AI/ML field. I want to be AI engineer, AI researcher, or you wanted to do PhD and all in AI and all. So you wanted to be in AI field in the next to 5 or 10 years. So I highly recommend go for M.tech AI only. Don't go for M.tech CSE and think that from there you can explore AI, because in M.tech CSE you have to do some core subjects that is necessary for completing the credit of M.tech. And so due to this you hardly able to took one or two courses related to AI ML field. Like, you can able to take machine learning or deep learning only, or machine learning or NLP. You cannot able to take all the courses deep, like ML, deep learning, computer vision, NLP, LLM, reinforcement learning, and lots of things. So that's why, if you are sure, then please prepare for GATE DA. Most of the IT is accepting. And also in my last video I made, like, students are confused, like, they are not able to get the seat. So if IT is taking direct admission, then they will take, because for if you consider IT Kharagpur, he is allowing IT GATE CSE, GATE DA, and another branches also. So basically they will take on the basis of GATE score. Okay. So why students are in too much dilemma? Because
if you can see that a student as directly comparing the marks, gate rank, don't compare gate rank, compare the score. Like if you are if your rank is 200 in gate DA and 400 500 in gate CSE, then don't compare that gate CSE student have 500 rank, he got the seat but I didn't, because their gate score is high because he got 500 rank out of 2 lakh student, but you got 200 rank out of 60,000 only, 60,000 students, so your gate score will be less and his gate score will be high, right? Also one more thing, a student are saying that IITs are not taking gate DA students, so I queried from my IIT Delhi junior student, IIT Delhi M.tech AI, and there is I think 17 a student in M.tech AI, and out of 17, 13 a student is took admission through gate D only, not gate CSE, not gate mechanical and all. So 13 a student is gate D only. So see, IITs are taking admission. If you don't believe, then you can file RTI and to take the information from the IITs, various IITs, and you can see what is the number of students got into M.tech AI or data science program through gate DA. There is a high number. Okay, so basically this is the case. So don't fall in the trap. Please do proper research and according to your interest only go. And some students also say that in gate CSE we have option for PSU government job and all. So yeah, this is definitely there is a government job and all. So if you wanted the government job or anything like you are not sure, then definitely go for gate CSE only. And for both preparing for gate CSCDA parallelly, it may take little high amount of time because gate there is a overlap in subjects but not fully. Mostly 60 to 65% overlap only, rest of 40% extra. So you can say gate CSE subject is too vast. After adding 40% extra, it will be too much vast. So it will maybe took more than 1 year to complete both together. So it will kill your like how 1.5 or 2 years and only for gate, but you have to develop another skills also during your BTech. So only either prepare for gate CSE or gate DA. If you are sure for software industry, then CSE, and if you're sure for M.tech AI, AIML industry, then M.tech prepare for gate DA. It is not vast syllabus and you can complete within 6 month or 8 month entirely get the syllabus and all with revision and practice. Okay, so yeah, that's it. So if you guys have any questions, please ask. One questions from Sovik. Bhaiya, in IIT MTech BTech 8 plus CGPA enough to get higher role like AI researcher? Yes, definitely. So mostly don't try to be below 7, but above 7 is good and 8 plus is yeah really good. Only not CGPA, also you need to have like research work, good projects and skills and all. Yeah. So Utsav, please ask. Hello, sir. Hello. Where I have completed the mathematics portion and data structures and algorithm, as well as machine learning. I have done a course of Professor Pratos on NPTEL, Mhm. where he has explained everything very much mathematically. Mhm. So, and now I am just struggling, as you mentioned, that not just prepare for GATE, also build your skills also. So I'm Mhm. struggling in doing the actual works. I know how transformer work. I know what is the mathematics Mhm. behind it. But Mhm. how I can use it, I can code it and build some working model. So coding is, I don't think like coding is difficult. If you have clear the, if you know the fundamental, you know the logics of how transformer works,
For example, let's suppose RNN. So you know the fundamental of RNN, how RNN architecture works. So try to code RNN from scratch. And if you want to after that you must like slowly improve the coding skills, doing a small things and gradually increase. And after for transformer, let's see the a small component of it, like how to encode the embeddings layer, how to add the positional coding, how to concatenate it, then how to uh, uh, code for self attention and all, slowly, and then make the encoder block, and also break component by component, make functions, code it from scratch, write down every logic on pen, on paper using pen, so that you know is everything properly, then code it. If you are stuck somewhere, then try to take help from ChatGPT and all, because you can take help. No, there is no any bad thing about it. Also, after implementing, if your implementation is working properly, then after that you can look for the implementation on GitHub. Maybe a lot of people have implemented already transformer. Look at their code and look how they have implemented, and learn from there also. Yeah. So do we need to implement all the models which we have from scratch? No, no need to implement. Like I am saying to us guys, like currently this is your learning phase, right? So please implement us from scratch, so that you can learn everything properly. But in industry you don't need to implement from scratch anything. But for during learning phase we need to implement it. Okay, thank you. Yeah. And one more question, that how much questions we need to do, and how much amount of mock test we should give while preparing for the gate DA. Um, See, if you talk about full length mock test, I think 10 mock test is sufficient, and this is highly depend on person to person. Basically, mock test, full length mock test is to check your everything, like how to perform, how you should be prepare for the exam, and try to be sit for 3 hours, do everything, find your way how you can maximize the marks in exam, and how much silly mistake you are doing, how you can avoid it. So that thing you have to learn during the mock test. That's why mock test is designed. And practice question is needed, I think. In gate at least solve 3 to 4 5,000 unique questions, so that you can able to solve any questions in exam. Yeah. I'm clear. But could you please share some resources for the question practice, because the syllabus of gate DA is a bit more when it comes to mathematics, and quite Mm-hmm. vast, and the variant of questions every year is changing very rapidly. If I see the PYQ from the first session till now, there has been a lot of variations in the questions regarding the mathematical portion in gate D especially. Yeah, basically, gate mathematics is vast compared to CSE. So if you know every concepts and all, you have done little practice questions on every topics, then you can able to solve. And for resources, like you can solve the PYQ of gate CSE also. And if you want the practice questions, then there is a not more practice question on internet for gate D, because it's new. So that's why, like, we have designed the extra practice questions, like great level of practice questions. These are the high quality questions, and all are unique kind of. So you, if you want, then you can explore my course website, CSandAi.com, and then you can see the practice questions and all. So there will be, I think, 1800 plus practice questions for whole gate DS syllabus. And if you want the test series, then test series also have subject wise test series, multi subject wise, and full length. And number of question in all the test series around 1300. So if you combine both, then it is 3000 plus questions. So there you will, here you will get like 3000 plus questions, and all are mostly unique, and all are good quality of questions, so you can explore it. Yeah.
And all are, yeah, gate oriented questions, so definitely. Any questions? Yeah, ask Ravi. Hello, am I audible? Hello. Yeah, audible. सर, हिंदी में बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं बोल रहा था कि अभी तो मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने इस बार दिया गेट। हम्म। तो उसमें मैं बोल रहा था कि मैं क्या अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है। हम्म। तो मेरे को बस प्रैक्टिस करना है, तो इसके साथ क्या हम्म। मैं मतलब प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ जरूर, मतलब लाइक सिलेबस कंप्लीट है तो अभी क्या है ना, प्रॉपर रिवीजन करो एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते रहो एंड प्रोजेक्ट्स करो एंड पैरेलल में डीएसए भी करते रहना, 1-2 घंटे रोज का टाइम निकाल के, क्योंकि ड्रॉपर है ना तो कोई और तो काम होगा नहीं, फ्री रहते होगे तो 1-2 घंटे रोज का डीएसए लर्निंग करो एंड लीड कोड वगैरह से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि ये हेल्पफुल रहेगा आगे प्लेसमेंट वगैरह में। तो वो अच्छा। करो एंड अच्छा, उसमें प्रोजेक्ट्स तो वो करना ही है। हाँ, आपने वो वीडियो में बताया था, मैं देखा था उसमें, आपने जब अपना वो जर्नी बता रहे थे अपना आईआईटी का, तो उसमें आपने बताया था कि डीएसए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप बहुत डेटा इम्पोर्टेंट। साइंस का डेटा साइंस का रोल में भी क्यों ना जाए, तो फिर उसमें भी हाँ इंपॉर्टेंट हाँ। होता हाँ क्योंकि आईआईटीज में सारी कंपनी मोस्टली, एक दो ही ऐसी मिलेगी जो नहीं ले रही होगी, नहीं तो 99.9% कंपनी ऐसी मिलेगी जो कि रिटन टेस्ट फर्स्ट राउंड होता है सबका, वो डीएसए पूछते ही हैं। डीएसए कोडिंग लीड कोड वगैरह के लेवल के तो रहेंगे, तो वहां से प्रैक्टिस कर लो अच्छे खासे। है। ओके, थैंक यू। या नो प्रॉब्लम। या एनी अदर क्वेश्चंस? मैं एक और क्वेश्चन था कि आपने जो एक बार मुझे रिसोर्स शेयर करा था प्रोफेसर पराग का, CO हाँ हाँ। 774 का, तो हम्म। उसका जो लेक्चर, जो उनके लेक्चर्स मैंने देखे, तो लेक्चर्स में जो मैथ्स पढ़ा रहे थे, जो थियरी और जो डिराइवेशन करा रहे थे, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट था, वो तो पूरा समझ में आ रहा था। लेकिन फिर मैंने उनका हम्म। असाइनमेंट खोल दिया गलती से। कोई ना, असाइनमेंट मत ही खोलो अभी। वो कॉलेज में जाके खोलना, उनका असाइनमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। वो सब मत देखो, असाइनमेंट में ये नहीं है कि तुम्हारे लिए केवल डिफिकल्ट है, सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, तो मार्क्स किसी के नहीं आते हैं, तो रिलेटिव होता है, तो उसका स्ट्रेस मत लो। लर्निंग करो अच्छे से बस अभी। असाइनमेंट बेसिकली पढ़ाएंगे उसके बाद, तो वो थोड़ा अलग लेवल का ही होता है असाइनमेंट, तुम बस जो पढ़ाए उसका थोड़ा बहुत नॉलेज यूज कर सकते हो, बाकी बहुत कुछ एक्स्ट्रा खुद से देखना होता है, तब जाके इम्प्लीमेंट कर पाओगे, तो असाइनमेंट बहुत डिफिकल्ट रहते हैं तो आईआईटीज में। वही तो मैं पूछना था कि आप मतलब मैं इतना से समझ गया कि अभी जो मैं एग्जाम भी दे के आया एनपीटीएल का, उसमें क्या था कि मैंने अलग से पढ़ रखा था कि मैंने एनपीटीएल से भी पढ़ा था, प्रोफेसर पराग से भी पढ़ा था, फिर कैंपस एक्स से भी पढ़ा था मैंने, और जो मैं गेट की तैयारी कर रहा हूँ वहां से मैं थोड़ा सा पढ़ा था एमएल। तो मैं क्वेश्चन अच्छे खासे करके आया था। और मुझे जहाँ जितने भी लोग सिर्फ एनपीटीएल के लेक्चर देख के गए थे, उनका हालत पूरा खराब हो गया था, हो ही नहीं पा रहा था उनसे। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कैसे ढूंढते हो एक टॉपिक को लेके। वो इंटरनेट सर्च से मिल जाएगा, यूट्यूब है, बाकी जब पढ़ रहे होगे तो माहौल रहता है वहाँ पे, बहुत स्टूडेंट होते हैं, किसी को कुछ एक्स्ट्रा मिल गया तो वो लोग बता देते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो वहाँ पे कैंपस में ये सब हो जाता है इजीली, क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं ना, तो इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले लेके हो जाएगा, उसका लोड मत लो, बहुत कुछ मिल जाएगा वहाँ जाने के बाद। ये तो बेनिफिट होता है ना वहाँ पे लर्निंग का, मतलब सब चीज मिल जाता है। अच्छा भैया, अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरा मैं अपने थर्ड ईयर में जाऊंगा, तो मैं थर्ड ईयर में गेट को मैं अच्छा डिसेंट रैंक ले आ जाता हूँ उसमें डीए में, तो हम लोग को हम्म। इंटर्नशिप वगैरह में कोई मिलता है क्या, वो कुछ फायदा वगैरह में? मिल सकता है, ट्राई कर सकते हो, गेट गेट में अच्छे से लाए हो तो मिल सकता है, वो डाल सकते हो कि मैंने ऐसे से क्रैक किया और मेरे पास थियोरेटिकल स्किल्स है इसमें, एंड बाकी प्रोजेक्ट करो तो वो दिखा देना, तो वो लोग समझ जाएंगे, एंड वैसे भी गेट क्रैक कर लोगे तो अच्छे खासे स्किल्स हो ही जाते हैं, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज अच्छा हो जाता है, तो जवाब दे पाते हो इंटरव्यू में इजीली। गेट के मतलब गेट का डीएसए खत्म करने के बाद जो लव बर्बर वाला सीरीज दिख रहा हूँ ना, और उसका रोहित नेगी का जहाँ जहाँ फंस रहा हूँ, तो वो बहुत आसान लग रहा है, वो उसमें कुछ ना दिक्कत नहीं आ रहा है हम्म। डीएसए में। हम्म। हम्म।
वही है ना। गेट का कर लोगे तो वो सारा क्लियर, क्योंकि गेट में क्या है ना, थियोरेटिकली अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस करते हो, तो अच्छा से पकड़ हो जाता है छोटे छोटे चीजों का भी गेट करने के बाद। तो क्या है, तुम डीएसए नॉर्मली देखोगे किसी का भी मतलब कोडिंग वाला, तो क्या है उसमें बस तुम जाके लीड कोड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, किसी का चीट शीट लेके, मतलब डीएसए शीट वगैरह लेके उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखो तो इजिली क्रैक हो जाता है, क्योंकि देखो सब कुछ तुम्हें थियोरेटिकली पता है, बस कोड करना है, तो वो धीरे धीरे सीख जाओगे। लैंग्वेज थोड़ा रिवाइज करो कि किस लैंग्वेज में करना है, पाइथन में या सी प्लस प्लस में, उसको अच्छे से सीख लो 1-2 वीक में, उसके बाद कोड करना शुरू कर दो। लॉजिक बस क्लियर होना चाहिए, जो कि हो जाता है गेट करने के बाद अच्छे से। एनीवन एल्स? हेलो। हेलो। हाँ, सर मैं बोल रहा था कि जो प्रोजेक्ट्स का मैं बात किया उसमें मतलब आईआईटीज के जो इंटरव्यूज होते हैं, मतलब कहीं भी किसी भी कंपनी के, तो वो हम्म। क्या अपने मैं अपने रिज्यूमे में ऐसा क्या डालूं जिससे वो थोड़ा सा ये लगे, मतलब कि हाँ इंटरेस्ट लोग दिखाए कि हाँ ये बंदा मतलब कुछ किया है। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट खोजूं जो मतलब जो पसंद आए लोगों को, जो इंटरव्यूअर्स हैं। आई थिंक ऐसे प्रोजेक्ट्स वगैरह करो पहले तो, एक मतलब बेसिक करो फंडामेंटल वाले, जिसमें कि क्लियर मतलब चीजें यूज हो रही हो। उसके बाद कुछ ऐसे करो जो कि तुम शो कर सकते हो कि रियल वर्ल्ड में इसका यूज केसेस है। ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स खुद से करो फाइंड करके, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। एंड डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी कि जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कंपनी किस चीज पे काम कर रही है। मान लो कोई कंपनी काम करे चैटबॉट वगैरह पे, और तुम उसमें चैटबॉट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट किया हो, तो वो वहाँ पे वो मतलब तुम्हारे पर ध्यान देंगे, बेनिफिट रहेगा तुम्हारे लिए। कोई कंपनी ओसीआर पे काम कर रही है, तुमने कंप्यूटर विजन में प्रोजेक्ट कर रखा है, ओसीआर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड ऑल, तो वो तुम्हारे प्रोजेक्ट पे फोकस रखे करेगी। तो वही होता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट से डालो। जब अप्लाई कर रहे हो तो रेज्यूमे अपडेट करते रहना हर एक कंपनी के लिए। सेम रेज्यूमे हर एक कंपनी में मत डालना, कंपनी देखना वो काम क्या कर रही है, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डालो। इसलिए बोल रहा हूँ सारे टाइप के प्रोजेक्ट्स कर लो, कंप्यूटर विजन, एनएलपी एंड ऑल, जो भी प्रोजेक्ट्स पॉसिबल है तुमसे हो पाता है वो सब सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कर लो। एंड जब भी अप्लाई करने की बारी है तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डालो रेज्यूमे में एंड अप्लाई कर दो। ऐसे करके करना है, ठीक है। ओके। या so in Honda, what was the eligibility criteria in your time? बेसिकली रिज्यूमे का तो कुछ आई डोंट थिंक उनको मतलब ऐसा था कि बीटेक एमटेक में किसी भी ब्रांच से हो सारे एलिजिबल थे। बेसिकली उसके बाद उन्होंने रिटन टेस्ट रखा था डीएसए राउंड का, तो वहाँ 2 क्वेश्चंस थे आई थिंक। उसके अलावा एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी थे रिलेटेड टू एवरी सब्जेक्ट। सो एमसीक्यू क्वेश्चंस, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, कंट्रोल सिस्टम एंड ऑल, तो सभी के क्वेश्चन मैथ मैथ के क्वेश्चंस भी थे। वो सब रिटन टेस्ट में था। उसमें एक मार्क्स सेट किया था उन्होंने, अगर उसको क्रॉस कर रहे हो, उससे प्लस मार्क्स आ रहे थे तुम्हारे, तो वो शॉर्ट लिस्ट कर रहे थे रेज्यूमे के लिए। उसके बाद रेज्यूमे स्क्रीनिंग वो लोग इंटरनली करते हैं। फिर रेज्यूमे स्क्रीनिंग में वो लोग बेसिकली देखते हैं तुम्हारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, तुम्हारे वर्क्स देखते हैं कि कंपनी में अभी जो जिस टीम में हायर करना है तुम्हें, उससे रिलेटेड तुमने काम किया या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं। उसके बाद वो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऐसे ही करके प्रोसेस होता है। फिर इंटरव्यू होता है, फिर इंटरव्यू में डिस्कशन होता है। उसके बाद जाके वो फाइनल डिसाइड करते हैं कि तुम्हें लेना है या नहीं। इंटरव्यू में बहुत कुछ जज होता है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम फिट हो गए या नहीं टीम में, तुम्हारे तुमने जो वर्क किया वो तुमने एक्चुअल किया या नहीं, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे देंगे कि इस टाइप का सिचुएशन होगा तो तुम कैसे हैंडल करोगे, हम मान लो इस टाइप का कोई प्रॉब्लम है हमें सॉल्व करना है कंपनी में, तो क्या क्या कर सकते हो, तो वो सब इस टाइप से पूछते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही है। हम्म। और किसी को कुछ पूछना है?
थैंक यू भैया। एंड भैया 10 12 मार्क्स मैटर करता है? नहीं, एमटेक आईआईटी प्लेसमेंट में मैटर नहीं करता है। किसी किसी कंपनी का होगा, 3 4 5 कंपनी ऐसी आएंगी जिनका रहता है, बाकी फर्क नहीं पड़ता है। ये बैचलर बीटेक में कितनी सीजीपी होनी चाहिए मिनिमम? 7 ही रखो, कहीं पे भी 7+ रखो, अच्छा रहता है। और एक चीज और 7 से पूछनी थी ऊपर कि जितना भी रखो। हाँ, आईआईटीज में जब क्लासेस चलते हैं तो खेलने मिलने का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तुमको ही निकालना होगा, मुझे नहीं मिला था। बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। शेड्यूल हेक्टिक होता है बहुत। तुम्हारे ऊपर है, मतलब तुम कितना टाइम किस चीज को देना चाहते हो, बट अगर पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आई थिंक नहीं मिलेगा। बट कुछ स्टूडेंट थे जो खेलते थे, मतलब जिनका पहले से बहुत कुछ पता था, आता था, तो उनके लिए इशू नहीं था, तो वो लोग इजीली सब चीज समझ जा रहे थे। जैसे कि कुछ लोग आईआईटी से बीटेक किए हुए थे, मेरे क्लास में थे आधे बच्चे आईआईटियंस थे, आईआईटी से बीटेक किए हुए थे। तो उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता था, तो वो लोग टाइम निकाल पाते थे। उसमें भी कुछ ऐसे थे जो पूरा पूरा पढ़ते ही थे, नहीं खेलते थे। तो एमटेक में डिफिकल्ट होता है। और एआई जैसी ब्रांचेस में चले जाओ, ये सीएस तो डिफिकल्ट होगा। बाकी बीटेक वालों के पास टाइम रहता है आईटी में, तो वो लोग थोड़ा खेलते वगैरह है, उन्हें टाइम मिलता है, वो लोग क्लब वगैरह ज्वाइन करते हैं, बहुत कुछ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते रहते और मान भैया। लो आईटी से हमें कोर्स खुद सेलेक्ट करना पड़ता है या फिर कोर्सेज हमें वो एक प्री बिल्ड स्ट्रक्चर उसी में आप जाना होता है? हैं। वहाँ पे कुछ फिक्स कोर्सेज होते हैं एवरी डिपार्टमेंट के, एमटेक सब्जेक्ट से रिलेटेड, स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड वो करने होंगे। उसके अलावा इलेक्टिव्स होते हैं जो कि तुम चूज कर सकते हो, कुछ फिक्स सेट ऑफ कोर्सेज होंगे, उसमें से चूज करने होते हैं। हाँ रवि। हाँ भैया, मैं बोल रहा था कि मैंने मनोज सर जो हैं वो पढ़ाते हैं हम्म। यूट्यूब पे। उन्होंने बोला था एक बार कि जो पीएचडी है उनका मतलब ज्यादा स्कोप है फ्यूचर में, जो ये पीएचडी इन एआई करेंगे। हम्म। तो हाँ, तो अगर मैं एमटेक करूँ और पीएचडी करूँ, मतलब कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा? स्कोप सभी चीजों का है एआई में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है। तुमको प्योर रिसर्चर ही बनना है, लाइक जैसे कि मेरा एआई रिसर्चर रोल है, बट हमें इंजीनियरिंग वर्क भी करना होता है, तो मैं दोनों काम करता हूँ। बट एक होता है कि प्योर रिसर्चर वर्क है, मतलब कि कुछ तुम्हें कंपनी से मतलब ही नहीं, वो उसका तुमने जो पेपर बनाया वो प्रोडक्शन में जा रहा है या नहीं, एक्चुअल में वर्क कर रहा है कि नहीं, तुम्हें बस कोई प्रॉब्लम मिला, तुम प्रॉब्लम फाइंड करके रिसर्च करो, तो वो सब पीएचडी के लिए होता है। बाकी जरूरी नहीं है पीएचडी, इंजीनियरिंग तो चाहिए ना, तो इंजीनियरिंग तुम एमटेक करके भी जा सकते हो। बाकी आफ्टर 3 to 4 year ऑफ एक्सपीरियंस गुड कंपनी में एआई रिसर्चर रोल पे तुम अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो वो सिमिलर टू पीएचडी ही होता है। तुम पेपर वगैरह पब्लिश कर दोगे कंपनी में जाके, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, मास्टर्स में तुमने पेपर पब्लिश कर दिया, तो काफी एक्सपीरियंस रिसर्च का हो ही जाता है तुम्हें, तो वो भी पीएचडी के बराबर ही होता है। तो वो बात चूज करना है कि तुम्हें स्टडी में आगे जाना है पीएचडी करके, या अच्छे कंपनी में जाके फिर वहां से वैसे रोल पे रिसर्च वाले काम कर करके आगे जाना है। तो सिमिलर काइंड ऑफ ही होता है। इवन इंडस्ट्री का थोड़ा मैटर ज्यादा भी करता है कि तुम्हारे पास एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है। पीएचडी में केवल तुम एक लैब में बैठ के काम की हो, एक्चुअल वर्क नहीं पता तुम्हें कि रियल वर्ल्ड में कैसे मॉडल काम करता है, तो वो सब डिपेंड करता है। समझ रहे हो? एप्लीकेशन साइड में जाना है या केवल रिसर्च 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 दिन रात, तो स्कोप दोनों का है। क्योंकि केवल रिसर्च से थोड़ी होगा, इम्प्लीमेंट करने वाले भी लोग चाहिए ना, तो इंजीनियर तो चाहिए ही। भैया मैंने प्रोफेसर मौसम के वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन देखा था रिसर्च एसोसिएट्स के लिए वो। हम्म। तो मैं पूछ रहा था, मैं सोच रहा था कि जब मेरा गेट क्लियर हो जाता है तो मैं मेरे कॉलेज में ऐसा रूल बना हुआ है कि अगर आपको फोर्थ ईयर में कहीं पे इंटर्नशिप मिल जाता है या फिर कहीं आरे आप एज आरे जाते हैं तो आपको कॉलेज अलाउ कर देता है कि आप जाओ वहां से आरे कर लो और जो चले जाओ, आपको कोर्सेज नहीं करने होते हैं। तो आपको क्या हम्म। लगता है उसमें क्या क्या वो देखते होंगे वो एक आरे के लिए? जा सकते हो, अच्छा है, मतलब रिसर्च एक्सपीरियंस मिलेगा वो उनके अंदर जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उस पे वो काम करवाएंगे। मतलब वो मतलब मुझे अपना रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना चाहिए उस चीज के लिए कुछ बताओगे आप? वो तो
बेसिकली तुम्हारे कॉलेज में तुमने क्या किया है, जो भी काम किया वो सब डाल दो। रिज्यूमे का क्या, रिसर्च लेवल का रिज्यूमे बनाओ, लाइक कुछ हाँ इस टाइप के प्रोजेक्ट्स दिखाना जिसमें तुमने कुछ रिसर्च किया है, काम किया है, जो कि कुछ नोवेलिटी लाई है तुमने, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। एंड इंटरव्यू वगैरह पे भी डिपेंड करेगा, वो इंटरव्यू वगैरह लेंगे तो हो जाएगा। एक बार ट्राई करना। देखता हूँ क्या होता है, आपको तो अगले साल में पता चलेगा। कोई नहीं, चलिए। Anybody has any question? I think everyone is clear. Yeah. So Sonu, please share one thing with the students, how can they start the preparation for 2027? Like, what would be the strategy and कब टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट शुरू करना चाहिए, टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना, कब प्रैक्टिस क्वेश्चन करने चाहिए, कब वीडियो लेक्चर्स, एंड व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग द सब्जेक्ट्स, किस सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहिए गेट डी की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सो मीटिंग एंड करने से पहले हम एक छोटा सा अगर तुम ये बता पाओ तो इट वुड बी बेटर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सी एस एंड ए आई। Yeah. So basically, गेट डे का अगर if you guys are starting from scratch, then please start from the mathematicals. Math, learn mathematics. Like you start the lectures of calculus and optimization. It will be the first, because here it is the you will get the base of everything, like every like how gradient works, how derivation and all, how optimization works. So first learn, watch the lectures, learn it properly, make the notes. After everything, after learning, after completing the lectures and all for the subject, particular subject, do revision of notes once, then solve the practice questions. Okay. After that, start another course like linear algebra, and then learn it again, do revision of notes, and then solve the practice questions. So kind of you can solve the watch the video lectures, understand everything, make the proper note, then solve the practice questions so that you know everything properly, from the solving the problem also, and from the point of view of concepts also, and make the proper notes. So let me first tell you the order of subjects. So like first I told calculus and optimization, and then you can learn the linear algebra. After that, statistics and probability. So all the maths gets clear. After that, go for easy subject like programming, Python programming. After that, learn the algorithm and data structure. Okay. So after that, go for DBMS, and then you'll need to learn AI and ML. Before AI and ML, complete everything, mathematics, programming, and DSA, data structure and algorithm, and also DBMS and warehousing. After that, learn the AI and ML, and at the end, you can learn general aptitude. So this sequence you can follow. So first learn the subject, make proper note, solve the practice question, and you can start test, subject by test series. After doing everything like learning the subjects, solving the practice questions, after that you can attempt the subject wise test. Okay. And so like that you can attempt the subject wise test, and after completing every full syllabus and full complete subject wise test, go for multi-subject test. So in that, in multi-subject test, multiple subjects you have to prepare for one time. So you are slowly going to understand like how you can attempt multiple subject at once, because for till now you are only learning one subject and giving the subject wise test. Now you are learning 3 to 4 subject and giving the multi subject test. So like that. And after completing everything multi subject also, do again proper revision of full gate syllabus notes. After that,
start the mock test. I think from October you can start the mock test, October mid or starting of October, and then give the mock test, and in between mock test analyze your mock test and analyze what mistakes you are doing. If you are forgetting any concept, then keep revising the notes. And yeah, keep revising the notes and point out what kind of silly mistakes you are doing. Try to avoid it. Try to be seated for 3 hours. Utilize 3 hours, and yeah, improve yourself during the mock test and all. So like that you can prepare for gate DA. Okay, thank you so much, Sonu. Guys, we conduct the webinar sessions on every Sunday. Uh, on 2 Sundays, the session would be a special session for premium students of CS and AI, and on 2 Sundays, the session would be for free for everyone. So Yeah. on our WhatsApp number 852 9939058, you can get the Zoom link and information about the next webinar AMA session, where you can ask anything directly from Sonu and can clear your doubts regarding the GATE, DA paper, or maybe CS paper or counseling. Thank you so much, everyone, for Mm. joining the session. We will meet again in the next. Yeah. And yeah, yeah, you can take the full courses because we are giving the premium support. Like we will give you the if you get demotivated, you get in any trap, then we can help you, and we will talk every weekend with you. So if you take full courses, complete courses, then we will give you the premium support and all. So yeah.